perseverance, dedication, and commitment. With this thought and commitment, let us call our sweet children, the students of Chandrahasana Vidyapit, to say some words on this glorious day. Good morning, everyone. I am Master Nitish Sahu from grade 7. Happy Independence Day to all. I am going to perform Independence Day speech in Hindi, जिसके लिए हम करते प्रतिवर्ष इंतजार। आ गया लो वो त्योहार, आओ मचाए शोरगुल, भारत माँ की आज जय बोल। आन देश की शान देश की, देश के हम संतान हैं, तीन रंगों से सजा तिरंगा अपनी ये पहचान है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के साथ ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी की घोषणा की और 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया। तब से हर साल 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 15 अगस्त 2021 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका खून देश के काम आता है। स्वतंत्रता दिवस कई योद्धाओं जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई अन्य नेताओं के बलिदान का परिणाम है। भारत ने कई लोगों के लाखों वर्षों के बलिदान के बाद 1947 में आज़ादी पाने में कामयाब हासिल की। दिन को तिरंगा झंडा फहरा कर मनाते हैं। इस दिन पूरे देश को रंग बिरंगे झंडों और बैनरों से सजाया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह ने कहा था कि हमारे देश के युवाओं में राष्ट्र को बदलने की शक्ति है। भारत का भविष्य युवा पीढ़ी पर टिका है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र की सेवा करें और अपने काउंटी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। वीर शहीदों की शान का कैसे करूं बखान, भाव स्वयं ही प्राण है, शब्द मेरे बेजान। नतमस्तक हो आज से करे प्रतिज्ञा एक वीर के रक्त से उपजे वीर अनेक। आज हमारी शान का वे ही है अभिमान, हर पल हमको राह दे उनकी गाथाएं महान। अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा अपने दिलों में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। Good morning, India. Respected principal sir, teachers, parents, and all my dear friends. I am Om Shamisha of grade 7 from Chandrahasana Vidyapit, Mirani, Cheripur. Today I am standing in front of you to deliver a speech on the Independence Day. Before moving forward, I would like to wish you all who are present here a very happy Independence Day. It is 74th Independence Day of our India. Independence Day is also a very important day to keep the spirit of patriotism alive and the same time and read the spirit of freedom. In this also motivates us to bond with each other irrespective of which region, caste, community, creed or culture we belong to. Again I wish very happy Independence Day. Today is a historic day in the history of our country. On this day, 15th August 1947, we got independence from the British. This day reminds us of our true worth and importance as a freedom-loving, brave nation. The freedom that we are enjoying today is the result of decades-long struggles made by our forefathers and our great-leaders. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Lala Rajpat Rai, Rani Lakshmi Bai, and many others devoted the entire life for the independence of country. This sacrifice can never be forgotten. We are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Today we have the right to choose our government. Since independent, our country has developed in many areas, but there is still a lot to
be defied and achieved. It is our duty to stand up to those aspirations and fulfill the dreams of a developed and successful country with peace and harmony. On this day, our Prime Minister hoisted the flag in the Red Fort. Thank you. Jai Hind. I am Suresh Patel from class 8 from Chandrahasini Vidyapeeth, and today I reported a speech. First of all, I wish you a very happy Independence Day. I wish you a very happy Independence Day, and I am proud of myself that I present this speech. This day is the most important day for all of us, for all of our Indian, because on this day in 1947 we got freedom from British rule. Friends, are great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai, Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru, Lala Rajpat Rai, and many more devoted their entire life for got freedom from the British rule for our country. Today we are fortunate that we born in independent country, and we have our own fundamental rights, and there is no any princeless, and our brave soldier fight for us continuously. So it is our responsibility and duty to perform progress to our country together with our family and develop our country. We have to fulfill the promise that we have been doing with our land, our India. No doubt we are a free land. But this free land is surrounded by many problems, facing many problems, many issues like overpopulation, undevelopment, poverty, undevelopment of rural area, and many more. In British India, we our social, political, and economic condition were very bad. We are India under slavery of foreign force. We should struggle and thankful to our leader who has realized it. This freedom, the struggle of our many freedom fighters, they can devoted their entire life for our independence and everything and support the causes of Independence Day. Freedom is a precious gift of our freedom fighter. Freedom is a precious gift for us by our freedom fighter. Happy Independence Day. Thank you. Wow, such an amazing